क्या मैं अनहैप्पी हूं विद दैट रिजल्ट? ऑफ कोर्स यस। क्या मैं गुस्सा हूं किसी से? वेल, टीम से तो नहीं, कोई प्लेयर से भी नहीं, बट कुछ चीज है जिससे हाँ, और हम आएंगे उस पर। क्या मैं बोलूंगा कि मैं प्राउड हूं चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए विद दैट परफॉर्मेंस? 100% यस। क्या मैं ब्लेम करूंगा किसी को भी, कोई इंडिविजुअल को? नो, नो, नो प्लेयर नीड्स टू बी ब्लेम्ड। क्या मैं बोलूंगा कि चेल्सी फुटबॉल क्लब डिजर्व्ड a victory in that final? Yes. Did Liverpool deserve a victory in the final? Absolutely yes as well. Or that is why I would say congratulations Liverpool. It is basically your year. आपका टाइम है तो एंजॉय करिए. Unfortunately for Chelsea fans, it's not to be. लेकिन हाँ, it's been a decade for Liverpool. Carabao Cup final. तो kudos for you to be able to keep your nerve last moment तक. और वही difference था. Or Chelsea fans, come on. Blue is the color, football is the game. We are all together, and winning is our aim. So cheer us on through the sun and rain, because Chelsea is our name. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. And I figure out कर ही लिए होंगे. We are on to the Carabao Cup final review. हाँ, late आ रहा है. आप yeah, come on, understand कर सकते हैं. We were literally online for like maybe couple of hours past midnight. Plus the fact that disappointment, जैसे मैंने बोला, है रिजल्ट के साथ. So it is only human कि मैं थोड़ा सा लेट आऊं, just gather my thoughts and then आप शेयर करूं. बट यस, इतना नहीं, रात को लेट तक वी वर डेफिनेटली वाचिंग बार्सिलोना की गेम, जो हम क्विकली कवर करेंगे, एंड अ लिटिल बिट ऑफ ईपीएल न्यूज एज वेल. तो यस, गेटिंग इनटू इट. कहां से शुरू करें? वेल, चेल्सी फैंस एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल फैंस, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स. फर्स्टली, अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल. 0-0 कितने दफा बोलते हो आप कि आपको मजा आया? 2007 में एक हुआ था न्यू वेम्बली में, पहला मैच आपको याद है, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. इतना एंटिसिपेट मैच, इतना बेसिकली बिल्डअप हुआ था, जस्ट लाइक दिस गेम और इवन मोर. लेकिन वो कितना डिसअपॉइंट किया था इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, एक्सेप्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा टाइम जहां पर चेल्सी स्कोर की थी. लेकिन दिस टाइम, वाओ, क्या गेम था. 0-0 एंड टू एंड, मतलब आई वुड से चांसेस दोनों टीम के साथ थे. टॉकिंग अबाउट चांसेस, सॉरी, आना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक द मेन डिफरेंस, जैसे मैंने बोला, इट्स अबाउट दैट कीपिंग द नर्व. और वही था इन द लास्ट थर्ड. Chelsea की decision making was not up to the mark, and that was the only complaint I have from that match, if at all. और ये complaint नया नहीं है, लैम्पार्ड के समय से चले आ रहा है. तो it's something that Chelsea needs to work on. इतना ही बोलूंगा क्विकली फॉर चेल्सी. यस, मोर रिसेंटली ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया है. आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दैट, क्योंकि हमारे पास बहुत यंग प्लेयर्स है, बहुत टैलेंट है, बहुत सारा प्रॉमिस है. लेट्स एक्चुअली बिल्ड विद एक्सपीरियंस, और वो ही इन मोमेंट्स में यूज आएगा. Obviously, players should get into the head of how to perform in this big game as well. It comes down to that. लेकिन हाँ, we are getting there. Not to worry. इतना नहीं बोलूंगा. यस, मैं चाह रहा था एक और स्टोरी बन जाए यार केपा के लिए. बेचारा, आई रियली फील फॉर हिम. 2019 में सब जानते क्या हुआ था. वो रहेगा, लाइफ तक रहेगा उसके लिए, what had happened. Unfortunately, he did not get to rectify that. Yes, there were debates. Surprisingly, ESPN, they actually interviewed Tuchel saying that, oh, people are surprised that you substituted Kepa. Really? Really? आप जब केपा जिताते हो तब तो इतना ही बोलते हो भाई. सुपर कप, प्लेमथ आर्गेल, व्हाट नॉट, क्या सेव्स पर सेव्स यार, इतने सारे सेव्स. आपको याद नहीं आ रहा क्या किया था केपा ने सेमीज में इन द वर्ल्ड क्लब कप फाइनल? इम्पॉसिबल. ही डिजर्व्ड इट. वो टीम प्लान था और आज जचा नहीं, बस होता है यार, इट्स नॉट योर डे, कम ऑन. एनीवे, कमिंग बैक टू एक्चुअल चांसेस, जिसने बोला था, very early on, Pulisic got basically a cross from Azpilicueta, and मेरे ख्याल से उनके पास 1-2 सेकंड और थे to just look around or maybe even take a touch, क्योंकि कोई Liverpool player was not there at an arm distance उनके साथ. तो certainly उन्होंने क्या किया, he went with the gut, went with the instinct, first touch, tried to just hit it in goal. लेकिन केलर के पास straight, and केलर good save as well. बहुत ही kind of instinctive था वो. लेकिन ऐसा नहीं है कि चेल्सी ही मिस की. हाँ, चेल्सी के पास क्लियर कट चांसेस थे, मे बी एक एक्स्ट्रा सेकंड था टू फिनिश दैट चांस एंड मोर. लेकिन आई थिंक इट वाज लिवरपूल एज वेल. फर्स्ट हाफ में स्पेशली ट्रेंट ने एक ब्रिलियंट क्रॉस मारा, एंड इट वाज साडियो माने who missed that header. He in fact took the header बहुत wide. I think Jota होते तो certainly it could have been a goal, I feel, or at least work करते. Mendy in the goal. Yeah, talking about the team, मैंने बोला नहीं, we started with a 3-4-3.
That is our tried and tested in finals, or Liverpool with a 4-3-3. No surprises. The only big surprise was Ziyech थे ही नहीं bench पर. हाँ इंजर्ड थे recently, but I think it was pretty bad. और क्रिस्टियनसन नहीं थे. That was a loss, but हाँ did Chalobah come and did well. Absolutely, he did very well. तो मैं complaints नहीं रखना चाहूंगा वहां पर. Kovacic start कर रहे थे, Mount start कर रहे थे, तो there were a lot of positives भी for Chelsea Football Club. And Kepa, like said, bench पर थे जो late substitute आ गए. And Liverpool के लिए Thiago unfortunately was injured during warm up. वो एक surprise था, लेकिन केटा कमिंग जो चेल्सी के साथ अच्छा किए in the past. I remember talking in the previews, and certainly he has a shot on him. और क्या उन्होंने एक shot लिया? Absolutely. That is what he's made for, taking shots against Chelsea Football Club and scoring. But nahi, इस बार it was Mendy. Mendy, hats off by hats off. For me, Chelsea के लिए man of the match. Period. Yes, आप लोगों के लिए अलग होगा. Comment करिए. बहुत डिबेट था. मैं 4 लोगों का नाम लूंगा. चलो. Thiago Silva, yes, along with obviously Mendy. Kai Havertz and Thiago Silva. Wow, outstanding performance. Kai Havertz work rate throughout, running channels throughout. Thiago Silva literally keeping us at bay, or keeping Liverpool at bay. क्या clearances, he defied science. लेकिन Mendy last line of defense थे, ज़्यादा saves करना पड़ा, so that is why I went with Mendy, क्योंकि world class saves, 4 से 5. And who was the fourth? For me, Marcos Alonso. हमेशा I go behind him saying that hey क्या यार आपको defensively नहीं आता. Mo Salah थे मैच में until that penalty shot. I did not see him. Marcos Alonso great, and offensively most of the chances first half में हुए Marcos Alonso के cross से, diagonal pass से, brilliant. Talking about the diagonal pass, one pass to Havertz was outstanding. Marcos Alonso से first half में, and he passed it to Mount. जो Mount took a direct shot I think at Keller, लेकिन again it was not a clear cut chance. ये वाला Mount again could have taken an extra second placement के लिए, लेकिन Mount का ही बात करते यार. एक और सिटर यार, पुलिसिक जैसा ही बोलूंगा, और probably और easy था. तो Pulisic passed it to Havertz passed it to Mount, or Mount, instead of this time just taking a shot instinctively or taking it hard, went for placement, curling the ball wide. Already we had missed 2 to 3 very good chances. Though certainly I think मैं expect रहा हूँ हम goal मारते. Aspilicueta took a left footer, tried to curl the ball. नहीं, but I think that was a long shot. Certainly, I will not blame him. लेकिन हाँ, I think our wing backs were great in that first half. बहुत ही अच्छा किए. हाँ, midfield में we were overrun क्योंकि यार it was 2 versus 3. Kante wasn't himself. Kovacic आप बोल सकते हो कि इंजरी से बाहर आ रहे थे. So we weren't having as much possession in midfield, especially in the middle part of the first half. Starting of the first half हम काफी dominate कर रहे थे. But then second half में क्या हुआ? Second half में I think I don't know if it's second half or whatever, Pulisic had an absolutely brilliant through pass ऊपर से to Mount, who made a great run, और literally clear थे यार, 1 versus 1 versus Keller, लेकिन नहीं, Mount beat Keller but not the post. ये पॉइंट था जहां पर मुझे लगा यार luck is not with us. It was certainly clear, और तभी ये प्रूव हुआ कि यस, एक चीज जिससे मैं नाखुश हूं, रिमेंबर आई सेड, और गुस्सा हूं, VAR. भाई साहब, VAR आप कहां थे? कोई मुझे बोलिए, केटा का टैकल जो था चालोबा पर, क्या रीजन है रेड कार्ड नहीं देने का? क्या रीजन है VAR did not take a detailed look at that? पहले इन नॉर्मल गेम के लिए लगा कि certainly was a 50-50 चैलेंज, और होता है, चालोबा मे बी बैडली इंजर्ड है, he got the bad side of the coin, लेकिन ऑन रिप्ले क्लियर था कि फर्स्ट 50-50 चैलेंज था, बट केटा ने अपना स्टड रखा एयर पे फॉर एन एक्स्ट्रा 3 सेकेंड्स और हिट द ग्रॉइन ऑफ चालोबा विद हिज फीट और फुट, रादर एम्ड हाई. क्लियर, नॉट इवन अ डाउट. मैं कोई रिग्रेट नहीं रखता, इट वाज अ रेड कार्ड. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो रेड कार्ड मिलता केटा को, चेल्सी जीतती, फिर भी आई थिंक चेल्सी फिनिश नहीं करती अपने चांसेस, और मे बी वी वुडंट हैव ओपनड अप, एंड मे बी लिवरपूल एक डिफरेंट टैक्टिक यूज करती व्हिच वुड हैव वर्कड इन देयर फेवर. लेकिन इट इज व्हाट इट इज. इट वाज अ रेड कार्ड. क्यों नहीं मिलता चेल्सी को ऑफ द ग्रीन? रिमेंबर यस्टरडे ही बात हो रही थी. नो ऑफेंस, लेकिन मैन सिटी फैंस, ट्रस्ट मी, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है वो आपको मिलता है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन मेजर टूर्नामेंट्स. आई डोंट नो व्हाई डजंट हैपन विद चेल्सी, and it's a Chelsea thing, it's a Man United thing. Liverpool and Man City, I always felt you get the rub of the green. Again, kudos to Liverpool, deserved the victory as well, लेकिन I think Chelsea deserved that केटा को रेड कार्ड मिलता उस मोमेंट में. एंड लिवरपूल बोलेगी यार कम ऑन यार, मार्टिप का गोल था वो क्यों नहीं दिया? मार्टिप स्कोर्ड अ गोल, एंड बैड डिफेंडिंग फॉर वंस बाय चेल्सी. Yes, I think in that very moment maybe Thiago Silva had an error or maybe Rudiger had an error, लेकिन
I think it was clear कि Virgil van Dijk had pulled Reece James back and he Virgil van Dijk offside position पे तो definitely बनता है क्या it would have clear been an offside. It is the rule. आप change नहीं कर सकते हो. And that is something that is a fact. लेकिन when it comes to decision making about that red card, that is subjective. For me, it was a red card. Talking about offside goals, man. भाई मेंडी के और दो तीन भयंकर सेव हुए सेकंड हाफ में. थियागो सिल्वा के भयंकर क्लियरेंसेस. लुइस डियाज, वाओ क्या खेला है लिवरपूल के. वाओ ब्रिलियंट. लिटरली पिंग पोंग हो रहा था यार अपने बॉक्स में. तो चेल्सी के बॉक्स में फिर भी मेंडी और थियागो सिल्वा लगे रहे थे. लेकिन वी स्कोर्ड अ गोल एज वेल. ऑफसाइड अगेन. हैवर्ट्स दिस टाइम एक्स्ट्रा टाइम बहुत ही काइंड ऑफ वियर्ड था क्योंकि yes, by the way, later on Aspilicueta went off and Reece James had come on already. Lukaku आ गए थे, Werner आ गए थे. तो I was thinking यार एक्स्ट्रा टाइम तक तो एटलीस्ट वी विल गेट दैट मोमेंटम. और यस, आप डिबेट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट एक्स्ट्रा टाइम परफॉर्मेंस. जहां तक 0-0 था, we definitely deserved more in terms of gameplay towards the end, especially. और extra time तो certainly yes. हाँ, Liverpool dominate की, especially in that first half. After that first few minutes, लेकिन हाँ, I think overall it had to be our game. क्योंकि हाँ, it's just about us. हम last chance create कर सकते थे कि नहीं. लेकिन हाँ, वर्नर और लुकाकू भाई साहब, I would not say they did badly. लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा effort, better performance as well दोनों का. लेकिन offside, यू से वर्नर वाज बॉर्न ऑफसाइड. लुकाकू मेरे ख्याल से वहीं पैदा हुए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इस गेम में लुकाकू, हैवर्ट्स, आई डोंट नो, ऑफसाइड गोल्स हो रहे थे चेल्सी के. एक बार तो लिटरली मुझे लगा यार गोल हो गया. आई स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एज वेल. लेकिन हाँ, टुकल भी डिड दैट, बट इट वाज क्लियरली ऑफसाइड. इट वाज बाय अ विस्कर. अगेन, रूल इज व्हाट इट इज. मैं नहीं बोलूंगा अनफेयरली कि इट वाज अ गोल. वी वर अनलकी. इट वाज मे बी द एल्बो और द नी कीपिंग लुकाकू ऑफसाइड. लेकिन हाँ, दैट वाज जस्ट अबाउट 1 सेंटीमीटर. वो ही होता है इन दिस मोमेंट. इट वाज वन ऑफ द नाइट. क्लियर था कि चेल्सी का लक नहीं था. फॉर मी यस. बाद में आई थिंक लेट ऑन कोवाचिच भी आई थिंक येलो कार्ड पे थे. कांटे ने येलो कार्ड लिया एक्स्ट्रा टाइम में. सो मे बी मुझे लग रहा था कि यार अभी हम पेनल्टी ले जाएंगे, प्ले दैट गेम. क्योंकि यस, I don't think we have that attacking ability. Tired भी लग रहे थे towards the end, Havertz, because yeah, he's run too much in the recent weeks. So it was only kind of clear कि यार इतने सारे chances बने. Forget that. Keep your mind fresh. Get Kepa on a super sub and go to penalties. और वही हुआ. Penalties में wow. Manchester United fans, आपको याद है the Villarreal Manchester United game, Europa League? It was literally that. क्योंकि every penalty kick was very good. I will not say great. And none of the goalkeepers had a chance. Maybe आप बोल सकते हो Timo Werner जो kick लिए in sudden death. Yeah, surprisingly he didn't come in the first 5 penalty kicks. वो almost save कर दिया गया था by Keller. Was great throughout the game. लेकिन I think एक था certainly Konate का जो Kepa I think got a hand to it but still couldn't save it. That was telling for me. और वही हुआ क्योंकि yes, it was just before the kick that Kepa took 11th kick. Yes, 11th kick. And it would have again repeated जो भी हुआ था अभी तक. लेकिन नहीं, Kepa missed his shot. Keller had taken the shot. Kepa over the bar. आप बोल सकते हो maybe I'm wearing this shirt, the ball into space. No. This is just to say that this is part of the game. होता है. Move on. I don't think there's anything to be disappointed about that. That is penalty shootout. But yes, kudos to Barcelona. Liverpool, Barcelona again because of winning. Athletic Bilbao, and I don't know what is about Atletico Madrid, Athletic Bilbao, 4 goals. Yes, Barcelona scored 4 goals. Brilliant performance. I think Aubameyang scored the first. Dembele, probably one of the man of the matches for me, assist and a goal. I think Barcelona totally deserve all the kudos that they can get. Back to 4th position if I'm not wrong. Thirdly, favorites मेरे ख्याल से 3rd position के लिए. And Luke De Jong, Memphis Depay scoring. Wow, ये तो perfect night हो गया बार्सिलोना के लिए almost. लेकिन उतना ही नहीं, बाकी लीग में देखा जाए तो by the way, actually sticking to La Liga itself, it was Real Betis losing. So Real Betis now what? They are 3rd if I'm not wrong, and they lost to Sevilla. Now Sevilla 2nd, बहुत ही अच्छा performance उनका. And absolutely, there were great scenes. Yes, I think it's Real Madrid Sevilla first 2, and Barcelona should be 3rd from now, and that's what I think. आप बोलिए आपको क्या लगता है? But moving on from that to Serie काफी इंटरेस्टिंग हुआ कल संडे नाइट को. And the game of the day in terms of basically just वो drama last में, apart from the Chelsea game, has to be Lazio versus Napoli. Yes, Napoli won, top of the table. Wow. Yes, इंटर के पास है गेम हाथ में, लेकिन
Pedro, bhai sahab, ex-Chelsea player, getting a goal in the 88th minute. मैंने सोचा Lazio has got a point against Napoli. Insigne का early goal था, I think in the second half. लेकिन last minute में Fabian Ruiz getting a goal and Insigne getting the assist. Wow. Brilliant. What scenes. बराबर है points पे on top of the table. But like I said, Inter भी pole position पे रहे because of the fact that उनके पास एक game है in hand. So again, comment below who do you think is going to be the winner of Serie A. Literally every week होता है. Serie A is the most interesting league in terms of competition. मैं बोलते आ रहा हूँ इस season में. लेकिन in terms of EPL, congratulations to West Ham. Back to winning ways, and West Ham got a goal from Souček, I think around the hour mark against Wolves. जो early on लग रहा था इस year में, calendar year में at least, किया they may fight for that fourth spot, लेकिन नहीं. I think they flattered to deceive. Recent couple of weeks में prove किए Wolves don't have that quality. 40 points from 26 versus West Ham 45 from 27. Yes, आप बोल सकते हो इतना difference नहीं है. लेकिन West Ham technically are still fifth, in the reckoning उस Europa League spot के लिए, maybe for Champions League. But Arsenal, Manchester United, Spurs, I think have a better hand because of the players, because of the games in hand, etc. Especially for Arsenal. But yes, ये रहा अपना wrap Sunday का. Again, not happy, but people, let's not scapegoat anyone. हम इससे सीखेंगे. Disappointment है, another Wembley loss. लेकिन yes, FA Cup, League Cup हमें याद रहेगा. Maybe it is a blessing disguise for us for things to come. Last year क्या हुआ था? सबको याद है Chelsea fans how it ended. Let's hope for the best and take care. Keep the blue flag flying high.